So students, you know that nucleus of an atom actually has protons in it and neutrons in it, and electrons revolve around it. So the full chemistry depends upon the properties of nucleus. So what exactly is nucleus made up of? Nucleus is made up of some subatomic particles, which is protons and neutrons. So protons and neutrons are present inside the nucleus, which decide the property of atomic number, atomic mass and isotope. So these two particles actually are responsible for atomic number, for atomic mass and for isotopes. So what exactly is atomic number? Atomic number is denoted by Z, capital Z. And what is that atomic number? It is actually a number which is assigned to atom. But you must be thinking that on what basis we are assigning a number to a atom. Whether it is the number which is related to its discovery, or this is the number which depends upon the quantity present in nature of that atom. So how this number is assigned? So the number which is assigned is based on its number of protons. That means the total number of protons present in the nucleus is the atomic number. Let's take the example of oxygen. Oxygen atom has 8 number of protons in its nucleus. So atomic number is based on number of protons? Yes. The number of protons which are present in the atom defines the characteristic of the element. What does this number do? It defines the characteristic of the number, and as you know, atom is electrically neutral. That means the number of electron must be equal to the number of protons. So what are the characteristic property of element? Characteristic property of element are dependent upon its reactive capacity, that is valency, and this reactive capacity is actually dependent upon the number of electron, and the number of electron is same as the number of proton, that is atomic number. So that is why characteristic property of element depend upon the number of proton. So what is atomic mass? It is known as mass of an atom or mass number also. Is the sum of mass of electron, neutron and proton. But as you all know that electron is negligible mass, or we can say it is weightless, but so neutron and proton have considerable mass. So what we will be doing? We will be adding the mass of neutron and proton. So what is atomic mass? Atomic mass is the total number of protons and neutrons in an atom. This is also known as mass number. Let's take the example of fluorine. Fluorine has 9 protons and 10 neutrons. So we have seen atomic mass of fluorine will be 9 plus 10, that is 19 units. Another example, atomic mass of aluminium. So number of protons in aluminium is 13 and number of neutron is 14. So atomic mass will be 13 plus 14, that is 27 units. Now we'll take the example of chlorine. Chlorine has 17 protons and 18 neutrons, is equal to 35 units. But there is one more chlorine atom which contains 17 proton and 20 neutrons. So the mass is 37 units. How can one atom have different atomic masses or different number of neutrons? Protons are same, but you can see neutrons are different. That is 18 neutron and 20 neutrons. Mass are also different, 35 units and 37 units. So different forms of atoms. How can it be? How can one atom have two different forms? So answer to this question is isotopes. They are known as isotopes. That means, so let's understand isotopes on the basis of atomic number and atomic mass. You know what is atomic number? It is number of protons present in an atom. Atomic mass is number of protons and neutrons present in an atom. Atomic mass and atomic number are written in this way, that is superscript atomic mass and subscript atomic number. Let's take one example of carbon. If I take the example of carbon, 12 is written on the upper side, that is superscript, and 6 is written in the subscript. So 12 represents atomic mass and 6 represent atomic number.
Let's look at the chlorine. So this is the way how you write atomic mass and atomic number. Atomic mass is represented by A and atomic number by Z. Okay, now taking the chlorine example once again. 18 neutron and 20 neutron. There are two types of chlorine atoms. One has 17 proton and 18 neutron. Another one has 17 proton and 20 neutron. So same kind of atom but different mass number are called as isotopes. So what is the definition? Atoms of the same element having the same number of proton but different number of neutrons. This is known as isotopes. Let's take the example of carbon. So there are three types of carbon with the same proton, that is 6 protons in each, but different neutrons. One has 6 neutron, other has 7 neutron, and third one has 8 neutron. So carbon 12, that is 6 and 6, carbon 13, 6 and 7, and carbon 14, 6 and 8. So now let's see the three types of isotopes of element hydrogen. On the screen you can see first one is known as protium, that is ordinary hydrogen, which is written as one superscript and one subscript because it has one proton and one electron, but it has got no neutron here. So mass also remains 1 because it has got one proton. Now deuterium is known as heavy hydrogen because it has got one proton, one electron and one neutron. So mass number becomes 2 because one of proton and one of neutron. So it is added, so it becomes 2. Tritium, it is very heavy hydrogen. 1 is subscript and 3 is superscript. 3 denotes it has got 2 neutron and 1 proton, and here this 1 denotes it has got atomic number as 1 or the number of proton is 1. So these are the three types of isotopes. Okay. Now you can see here how they are drawn. All have the same number of proton, that is 1. So the number of electron will also be 1 only. So proton and electron remains the same. Okay. But what differs? It is number of neutron. First one, that is protium, does not have a neutron. Then we have deuterium, this has 1 neutron, and then we have tritium, it has got 2 neutrons. So this is the way three isotopes differ. Carbon we have seen already that it has got 3 isotopes with mass number 12, 13 and 14. Chlorine also 35 and 37. Now we will see the arrangement of electrons, that how these electrons are arranged in the nucleus of an atom, and this arrangement is known as electronic configuration. That means electrons arrangement. So these are the rules. We have already studied about the shells. I have already you must have seen in the video that what is K shell, what is L shell, what is M shell. So first shell near the nucleus is K shell. So let's see how these electrons, what are the rules to fill these electrons in the energy level. But before that you should know that who gave this scheme. It was given by Bohr and Bury. Niels Bohr was a scientist who actually gave this scheme, and what was the formula? Formula was 2n square. Now whereas n represents the number of shell, so K is 1, L is 2, M is 3 and so on. So let's find out that how to find the formula. Suppose I want to find how many electrons are to be filled in K shell. So what is the number opposite to it? It is 1. So in this we will substitute the value of n as 1. So 2 multiplied by 1 square, तो 1 का square 1 ही रहेगा, so it becomes 2. So that means in K shell there will be 2 electrons. You can see here in K shell the number of electron which is to be filled will be 2. Now let's see the same thing with second shell. Suppose L shell. L shell matlab 2. So 2n square mein we will write the value of 2n as 2. So it will be 2 into 2 square. So 2 into 4 हो जाएगा ना ये, because 2 2s are 4.
तो इट विल बी 4 2s are 8. तो L शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे? 8. So you can see here, this is the number, this is the way how they have calculated to fill the number of electrons in each shell. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are complete. तो पहले K में जाएगा, फिर L में जाएगा, फिर M में जाएगा, फिर N में जाएगा, and then so on. ऐसा नहीं होगा कि पहले L को fill कर दिया उसने. It will go sequence wise. So inner shells will be filled first and then it will be followed by the other shell. So 2n square is known as Bohr-Bury scheme as it was given by scientists Bohr and Bury. This you have already learnt in class 7, but still you know the 20 elements and their atomic number, but now you have to write their configuration कि K में, L में, M में, N में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो there's one electron only, so it will come in the first shell. वो स्कीम को फॉलो ही नहीं करेगा. वैसे तो जो K shell है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, but because there is only one electron, so it will come and sit in the K shell. When 2 electrons, so it will come and fill the K shell. Suppose 3 electrons, then first 2 में भरेगा और फिर next में चला जाएगा 1, है ना. And then 4 है तो 2 and 2, then 5 है तो पहले में 2, then 3, 6 है तो 2 and 4, 7 है तो 2 and 5. मतलब पहले वाले में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं. तो फर्स्ट इट विल फिल द K शेल, 2 डाल देगा उसमें. जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको फिर वो नेक्स्ट शेल में डालता जाएगा. अब यहाँ पे देखेंगे हम नियॉन का, तो पहले वाले में 2 आ गया, बचे कितने? 8, तो वो नेक्स्ट शेल में चलेगा. तो कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2 and 8. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So this was the rule that how electrons are filled in K, L, M shell. But now you have to understand one more thing, one more rule which applies is कि अगर कोई भी एटम है उसका जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं. तो ऑल्दो अगर मान लीजिए लास्ट शेल आपका M शेल है, ओके, M शेल की कैपेसिटी कितनी होगी? ये है आपका थर्ड शेल, तो आपका हो जाएगा 18. तो M की कैपेसिटी कितनी है? 18. लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं M शेल में, लेकिन यही लास्ट शेल बन रहा है उसका, तो यहाँ पे 10 नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे 8 आएंगे. आप 10 लास्ट में जो लास्ट शेल है उसमें कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं. दिस इज द rule. So the maximum number of electrons in the first orbit is 2, okay. In the second it is 8, in the third it is 18. लेकिन अगर ये जो थर्ड ऑर्बिट है ये लास्ट ऑर्बिट है तो फिर इसमें 18 अकोमोडेट नहीं होंगे, इसमें पहले 8 ही अकोमोडेट होंगे. And the fourth it is 32. However, the outermost orbit of an electrically neutral atom cannot have more than 8 electron. और ये जो कंडीशन है जहाँ पे लास्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल. सो इफ द एटम हैज ओनली वन शेल, अगर पहला ही शेल है उसके पास एक ही शेल है K शेल, तो उसमें कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर उसमें 2 हैं तो वो क्या फॉलो कर रहा है? वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा है. ओके, सो हीलियम, फॉर एग्जाम्पल हीलियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 2 है. दैट मीन्स इट हैज गॉट 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये तो न्यूक्लियस हो गया और ये इसका एक ही शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस कंडीशन इज नोन एज ड्यूप्लेट कंडीशन बिकॉज यहाँ पे भी पहला शेल है, ये K शेल है और K में 2 ही आते हैं और इसमें ऑलरेडी 2 हैं, यानी ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है इनर्ट. दैट मीन्स इट विल नॉट फर्दर रिएक्ट विद एनीथिंग because it has got its electronic configuration complete. इलेक्ट्रॉनिक इसका जो लास्ट शेल का जो भी रिक्वायरमेंट थी, या तो 2 रिक्वायरमेंट होती है लास्ट शेल में 8 या फर्स्ट शेल में 2, तो ये दोनों कंडीशन जो है इसकी फुलफिल्ड है ऑलरेडी, इसलिए ये उसको इनर्ट रहेगा. सो ऑल द इनर्ट गैसेस हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीट एक्सेप्ट हीलियम which has got duplet complete. So helium atom has 2 electrons. Now just now we have seen the example. They occupy the first and the only shell of the atom. Now suppose lithium है, lithium के पास 3 electrons हैं. So what will happen? Lithium has got atomic number as 3.
तो पहले शेल में कितने आ गए, 2 आ गए, बचा कितना, 1 बचा, तो वो सेकेंड शेल में चला गया. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम बिकम्स 2 1. So the neon atom has 10, so first में 2 and second में 10. अभी जो 10 सेकेंड में 8, अभी जो 8 वाली स्टेट है जिसमें नियॉन का देखेंगे 10 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है आपका 2:2 8. ये जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन, इसको बोलते हैं ऑक्टेट, और यही रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए सारी केमिस्ट्री है, बिकॉज ईच एंड एवरी atom wants to achieve this octet state. Each and every atom wants to have 8 electron in the outermost shell. Suppose उसका 2 7 है अगर, तो वो क्या करेगा, it will take 1 electron, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके बाद क्या बना लेगा, अपना octet state बना लेगा. लेकिन मान लीजिए 2:2 1 है, तो अब क्या करना है उसको, उस या 2 ऐसे देख लेते, 2 8 1 है किसी का, तो वो क्या करेगा, उसके लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इजी है देना, तो इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल टेक दिस कॉन्फ़िगरेशन 2 8. तो अल्टीमेटली सबको क्या चाहिए, सबको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वही उनकी रिक्वायरमेंट है, वही ऑक्टेट स्टेट के लिए सारी केमिस्ट्री है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम हियर. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19. ठीक है, नाउ लेट्स फिल इट विद बरी स्कीम, बोर्सबरी स्कीम. पहले शेल में 2 आ ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, ठीक है, थर्ड में 18 आ सकते हैं, और हमारे पास बचा कितना है, 9 बचे हैं, देखेंगे ना, 2 + 8 10, और 19 - 10 कितना होता है, 9, है ना, तो हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं. तो जो थर्ड वाली स्पेस है वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम अकॉर्डिंग टू द बोर्सबरी स्कीम. बट व्हाट डज दैट रूल सेज, रूल सेज कि अगर ये लास्ट शेल बन रहा है आपका, तो आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते, है ना. तो नाउ वी विल पुट 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर, बिकॉज दिस विल बिकम, नाउ दिस वाज द लास्ट शेल, सो आई कैन नॉट पुट 9 इलेक्ट्रॉन्स हियर. तो अभी मुझे 8 ही डालना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट बचा 1 वो आ जाएगा आपके 4th प्लेस पे, 1. So the configuration becomes 2 8 8 1. So this is the configuration of potassium. Although third shell was able to accommodate 18 places, but as a rule that last shell cannot have more than 8, so I have to submit here only 8 and 1 was transferred here. Taking the help from above example, you have to write the configuration of these. Actually, you have to write the configuration of all 20 elements that I will tell you the next page. Now comes valence shell, valence electron and valency. So first let's see what is valence shell. तो जो outermost shell है, suppose कोई atom है, उसका ये first shell, ये second shell, ये third shell, तो ये उसका सबसे outermost shell है, ये वाला, तो ये उसका outermost shell है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे valence shell. So the outermost shell of an atom is known as its valence shell, या इसका दूसरा नाम क्या है, valence orbit. Valence electron, इस shell में जितने भी, जो लास्ट वाला shell है हमारा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they are known as, suppose में मान लीजिए सिर्फ 1 2 3 4, suppose 4 electrons are there, so valence electrons are the number of electrons which are present in the outermost shell. तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के समझाऊं तो देखेंगे, सपोज पोटेशियम का एग्जांपल ले लेते हैं. अब इसका लास्ट शेल कौन सा होगा, ये वाला, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 1. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 हियर फॉर पोटेशियम. सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कितने हो सकते हैं, लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, तो या तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 से लेके 8 तक ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वैलेंस शेल में. ओके, 2 atoms of oxygen combine to form 1 molecule of oxygen. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combine to form 1 molecule of water, that is compound. So this is just a revision to tell you that this is the molecule of an element and this is the molecule of a compound.
So you can see on your screen atomic diagrams of the atoms of the first 20 elements. This you have to learn and draw in your copy. Okay, you have to draw this in your copy. So ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट हाइड्रोजन था. You know this method of writing which I have already told you, superscript and subscript. Here comes the mass number and here comes the atomic number. For example, helium we have 2 and 4, that means this is the atomic number. So whatever is the atomic number, it is the same. Electrons also, जिसमें 2 electrons हैं, तो कैसे इसको fill करेंगे, तो ये सारे diagrams आप इसको draw करेंगे and you will learn them. Let's see the example of calcium here. Calcium has got atomic number as 20, so that means it has got 20 electrons. Now we will fill the 20 electrons in the configuration. First is 2, then 8. Now next can accommodate 18, but because it is the last shell, although it can accommodate 18 here, but I have only 10 left. But if I write 10 here, तो वो जो रूल है कि लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, वो गलत हो जाएगा. इसलिए दिस इज़ रॉन्ग, सो आई एम गोइंग टू रब इट एंड आई विल राइट 8 हियर. तो अभी क्या बचा, 8, 8, 16, 17, 18 एंड 2 विल बी इन द लास्ट शेल, that is 2. So valence shell में 2 electrons. Okay. So before starting this topic that why atoms combine, let's see how bonds are formed. Bond formation. What is stable state? So stable state, first is either you have 2 electrons in the first shell, or if you have more than 2 or more shells, then you should have 8 electrons in the outermost shell. Then the atom is said to be in the stable state. So 2 states, duplet state and octet state. So all the inert gases, that is helium, neon, argon, they are in stable state because they have 8 electrons in the outermost shell. You can see on the screen their electronic configuration. Now, how is bond formed? When they are not in their stable state. And how do they form the bond? By giving, taking or sharing the electrons. Fact which decides how many electrons will be given or taken. What is valency? Valency is the combining capacity of an element. What do you mean by combining capacity of an element? So combining capacity of an element means its capacity to form a bond with the other atom. That is valency. So the capacity of an atom to give, accept or share electron to achieve the octet state is known as valency. So now we have understood the concept of valency, that it is the capacity of an atom to give, accept or share electrons to achieve the octet state. Let's take the example of hydrogen. Hydrogen has 1 electron in the outermost shell. To achieve the duplet, it needs 1 electron more. So 1 will be the valency of hydrogen because it is the number of electrons which is taken by hydrogen to complete its duplet. Let's take the example of oxygen. Oxygen electronic configuration 2, 6. That means first shell 2 electron, second shell or last shell 6 electron. How many electrons are less? 2. So it will need 2 electrons. So that is why 2 is the valency of oxygen because it will need 2 electrons to complete its octet. The configuration becomes 2, 8. Let's see the example of magnesium. The atomic number of magnesium is 282, that is 12. Atomic number is 12 and configuration is 282. Last shell 2 electron. So it needs how many? It needs 6. But it is very difficult to get 6. Rather, it is easy to give away these 2 electrons which are present in the outermost shell. Donating electrons will be easy. So magnesium will donate 2 electron and the configuration becomes 2, 8. Thus achieves its octet state. So valency of magnesium becomes 2 because it has donated 2 electrons. So till now you must have understood the electrons given or taken. That is, the number of electrons given or taken will be the valency of an atom. Let's see how bond is formed. We'll see the formation of sodium chloride. So what is the configuration of sodium? Configuration of sodium is, sodium has got atomic number as 11, right? So configuration becomes 281. Chlorine has got atomic number 17.
So configuration becomes 2, 8, 7. Sodium, as you can see, last shell 1 electron, very difficult to get 7, so it will donate 1 electron to the chlorine atom because chlorine needs one more atom to achieve its octet state, so it becomes 288 and thus bond forms. So this is the bond formation. This one electron will be donated to chlorine, and because sodium has given one electron, so it will form a bond with chlorine and with the valency 1 of sodium and 1 of chlorine, because sodium has donated 1 electron and chlorine has accepted 1 electron, so the bond is formed by this way. But one more thing you have to keep in mind, that when sodium has donated 1 electron, so it has got one positive charge and it has formed positive ion which is known as cation, and chlorine has accepted 1 electron, so it has got one negative charge and it becomes anion. This I have already explained. What are cations? The positive ions. And what are anions? Negative ions. Okay, so we have already seen the isotopes of hydrogen, carbon, chlorine, and two more you have to learn: oxygen and potassium. Oxygen 16 and oxygen 18. Atomic number remains the same, that is 8, but the mass number changes as 16 and 18. And potassium, that is mass number 39 and mass number 41. Atomic number 19 remains the same. So these are some examples of isotopes which you have to learn. We have already seen the structure of hydrogen isotope. So isotopes have same number of electron proton and hence the same electronic configuration. And as you all know that chemical property depend upon the electronic configuration, so they will be chemically same. And for example, chlorine atom of mass 37 and mass 35 both undergo the same reactions. So reactions of chlorine, either you take chlorine 37 or you take chlorine 35, the reactions will be same because they have same chemical properties, and they differ in few physical properties such as density, boiling point, etc. So chemically it will be same, but physically it will be different with different density and boiling point because their mass is different, because physical quantity depends upon the atomic mass or the mass number. Let us see some example. For example, boiling point of protium is this and deuterium is this. So higher the mass, higher is the boiling point. Isotopes like tritium, carbon 14, they are different in their physical properties and they are radioactive. Okay, they are radioactive. And what are radioactive elements? The radioactive elements or atoms are those which emit radiations. Unstable, so the nucleus break up emitting certain type of radiation. How radiations are formed? Now you know that because they become unstable, because of that extra neutron, their nuclei break up and emits the radiations. Thus carbon 14 and tritium are known as radioisotopes. You have to learn this. What are radioisotopes? Isotopes which emit radiations. So this is known as radioisotopes. What are the example? Carbon 14 and tritium. Hydrogen का जो tritium वाला है, that is radioisotope. The spontaneous decay of unstable radioisotopes is known as radioactivity. What is radioactivity? When unstable isotopes decay to give radiations. तो यही जो प्रॉपर्टी है इनके रेडिएशंस वाली, इसी से ये जो देखिए ये एक आइसोटोप है कोबाल्ट का. It is used in radiotherapy for treating cancer and other diseases. So this radiations are useful for us also. Carbon 14 is used to determine the age of historical and geological material. जो भी पुराना मटेरियल मिलता है हमें एक्सकवेशन से, तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी डेटिंग क्या होगी, तो वो कार्बन डेटिंग कहलाती है. एंड दैट कार्बन डेटिंग इज डन बाय दिस आइसोटोप, दैट इज कार्बन 14. Isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor. You have to learn these examples, okay, and you have to learn the isotopes also. ये आपको इसके जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है ये भी इनके याद करने पड़ेंगे. So this is the
isotope of uranium which is used as fuel in nuclear reactor. Isotope of iodine 131 is used in the treatment of goiter. Goiter आप सबको पता है कि जो हमारे गले में ऐसा swelling सी आ जाती है deficiency of iodine की वजह से, that is known as deficiency of that is known as goiter, and it is treated by this isotope. Radioactive isotopes are used in industry to detect the leakage in underground oil pipelines, gas pipelines and water pipes also. ठीक है, तो ये भी उनका एक use है. Now comes one very important fact, that how come atom has a fractional mass. जैसे कि मैंने बताया कि what is the atomic mass, it is the number of protons and number of neutron present in the atom. फिर कैसे क्लोरीन का जो मास आ रहा है वो 35.5 आ रहा है, डेसिमल्स में कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है. तो अभी इसको मेन समझने की बात ये है कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आइसोटोप्स आर देयर, दैट मीन्स देयर मे बी सम type of different chlorine as isotopes, and then we take out the average atomic mass, and when we take out the average atomic mass it comes out in fraction. So let's see this example कि कैसे इन्होंने क्लोरीन का fractional atomic mass निकाला है. ठीक है, so if I take a sample of chlorine, कहीं से भी अगर मैं कोई भी natural sample क्लोरीन का उठाती हूँ तो you will always see that there are two types of chlorine mixed in it. One is chlorine 35 and one is chlorine 37. ओके, ये दो जो क्लोरीन हैं ये मिक्स्ड रहते हैं क्लोरीन के सैंपल में, लेकिन दे आर इन फिक्स्ड अमाउंट. मीन्स 75% क्लोरीन 35 होता है और 25% क्लोरीन 37 होता है. ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं कि इफ़ आई टेल यू दैट देयर इज 75% ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एंड 25% ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टिकल, तो आप इसका क्या निकालेंगे, आप इसका एवरेज कैसे निकालेंगे वो है. अगर ये दोनों 50-50% होते तो क्या करते हम, अगर दोनों 50-50% होते तो हम क्या करते, इनको ऐड करते दोनों को और उसको डिवाइड कर देते, है ना, 2 से डिवाइड कर देते उसको, क्योंकि वो हमने उसका एवरेज निकालना है. लेकिन बिकॉज द परसेंटेज इज डिफरेंट सो वी विल टेक अनदर मेथड. एंड व्हाट इज़ दैट मेथड, दैट फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट और यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो. तो पहले हम रेशियो से करके आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा. 75 और 25 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो इट विल बी 3:1. ओके, तो 3:1 रेशियो आ गया. इसका मतलब कि जो 3 है वो 35 वाला है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे 37 वाले का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको हम 4 से. तो इस तरीके से 4 से हमने क्यों करा, क्योंकि ये 4 जो है ये 3 + 1 4 है. ये आपने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा चैप्टर तो उसे बताया होगा कि सम ऑफ रेशियो आ जाता है ये, तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, तो 4 से इसको हमने डिवाइड कर दिया और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 35.5 आया. ओके, नाउ आई विल शो यू अनदर मेथड ऑल्सो. उसको आप इजीली भी कर सकते हैं. एज यू नो 75% ऑफ 75% क्या है, क्लोरीन 35, ये लिख लिया, प्लस करा 25% ऑफ क्लोरीन 37. ओके, व्हेन आई हैव सॉल्व दिस, इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा आंसर आया 26.25 और जब हमने इसको सॉल्व किया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, तो हमारा आंसर आया 9.25 और जब आपने इसको ऐड किया तो यू विल गेट 35.5. ओके, सो दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट. आपकी बुक में रेशियो के हिसाब से दिया है, दैट वे ऑल्सो इट्स ओके एंड दिस वे ऑल्सो इट्स ओके. So this is how you will find out the fractional atomic mass of isotope. If you know the isotopes, their mass number, so you know the mass number, and then you should know the percentage or the ratio. या तो आपको percentage पता हो उसका कि किस परसेंट कितने परसेंट क्या है, या आपको क्या पता हो उसका रेशियो पता हो, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं. Now let's see another topic, that is आइसोबार्स. आइसोबार बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है. ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, अब आप इसको क्रिस क्रॉस कर दीजिए. अब आप कर दीजिए उसको
the isobars are the atoms of different elements but with same mass number. ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन उनके मास सेम हो सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या सेम हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी सेम, ऑल्दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, बट देयर दिस विल बी देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी सेम. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल ही आपको याद करने हैं. यहाँ पे दो सेट दिए हैं आपको दोनों सेट अच्छे से याद करने हैं कि आइसोबार्स के कि आर्गन एंड कैल्शियम. देखिए आर्गन 18 है, उसका एटॉमिक नंबर है 18 लेकिन उसका मास है 40. कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर बट मास इज 40. तो दोनों के मास क्या है, सेम है ना. डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स. उसी तरीके से देखेंगे क्रोमियम एंड आयरन, दोनों का मास जो है वो क्या है, 54 है. तो सेम, आइसो मीन्स सेम, और यहाँ पे क्या सेम हो गया है, मास नंबर. ठीक है, तो ये आपके आइसोबार्स हो गए. एंड बिकॉज दे हैव से डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, सो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते. दे आर डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. दोनों ही प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, केमिकल भी और फिजिकल भी. जबकि आइसोटोप्स में दे हैड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़.